So, so choosing the next hop. Actually, I have told you regarding the hop yesterday. Actually, hop हमारे पास क्या होता है? The next address in a routing. I have told you that routing is the mechanism in which your data is being sent from source to destination by using different sort of routes. राइट हमारे पास मल्टीपल राउट्स होते हैं जो आपके डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं नाउ व्हिच वन इज द बेस्ट पाथ टू टेक योर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पैकेट स्विच and this mechanism is called as routing mechanism, right? So I have told you a lot regarding this. And what is the next hop? Next hop is something the destination very next to the source. Are you getting me? I mean destination very next to the source. I mean, let's suppose I want to send data from computer A to computer B. I'm not talking about computer. I'm going node A to node B. So for node A, the next hop would be computer B or the node B. Okay. For B, it would be C and so on. I mean, the next hop, the next destination for which your data has to be sent. That is what you can call it as a next hop. I have make you clear regarding that in the last lecture, right? So in this lecture we have to elaborate more regarding this. Choosing the next hop, packet switch does not keep complete information about all possible destination, just keep next hop. So for each packet switch looks up the destination in table and forwards through connection to the next hop. अब देखें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो पैकेट स्विच होता है इट विल नॉट गो टू explain each and everything inside a packet. I mean, it will not elaborate each and everything inside a packet. Packet के अंदर बहुत सी control informations होती हैं, ठीक है? There is a source address, there is a destination address, and many other things are being encapsulated inside a packet. So what the packet switch is going to look for, actually it is going to look for the destination address, or you may call it as a next hop address. ठीक है जी, आपके पास destination address, आपके पास एक होता है source address और दूसरा होता है destination address in every packet. I have already told you, right? So your packet switch would look for only the destination address. It will not have to do anything regarding the source address. It will only going to I mean to say that work for the destination address, right? So in this particular slide it is just going to tell you that कि आपके पास जो आपका जो packet switch है, it will not waste his time over all the I mean execution of other control elements, right? It is only look for the destination address and then go for the next hop. और next hop की definition मैं आपको बता चुका हूँ. Next hop is the router or is the destination which is very next to the source, right? That's what you can call it as a next hop. Let's suppose I have given you the example. Let's suppose I have to go from Karachi to Peshawar or Karachi. Yes, Karachi to Peshawar. So what would be my next hop from Karachi? If I reach to the destination like Peshawar, तो उसके लिए मुझे multiple locations को cross करना पड़ेगा. मैं directly Peshawar नहीं जा सकता. Might be possible I would like directly go from Karachi to Lahore first, from Lahore to Islamabad, from Islamabad to Peshawar. ठीक है, आपकी जो ट्रेन है या आपका जो प्लेन है वो यही राउट्स लेगा आपके पास, ठीक है जी. तो अल्टीमेटली जब आपका डेटा, जब आप पहले हॉप, आपका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? लाहौर, right? From Karachi to Lahore, your next stop would be Lahore. Your next stop would not be the Peshawar. Peshawar is your ultimate destination. पेशावर आपके पास क्या है? आपकी डेस्टिनेशन है. उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल हॉप्स को क्रॉस करना है और जो भी आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी दैट वुड बी योर नेक्स्ट हॉप. फ्रॉम कराची द लाहौर इज द नेक्स्ट हॉप. फ्रॉम लाहौर द इस्लामाबाद वुड बी द नेक्स्ट हॉप. फ्रॉम इस्लामाबाद पेशावर वुड बी द फाइनल डेस्टिनेशन और द नेक्स्ट हॉप, राइट? So hopefully it is clear to you. Then this is the diagram that you are very much familiar with, that we have also discussed in our last class. I mean, we have switch 1, switch 2 and switch 3. Make sure these are the packet switches and these are the interfaces with which your switches are being connected, or these are the outgoing interfaces जहां से आपके पास multiple switches connected हैं. और right hand side के ऊपर जहां पे आपके पास A और B लिखा हुआ है, I mean the two computers are being connected with these particular switches. अब मैं आपको refresh करने के लिए आपको just remind करवा दूं कि what does 1,2 means. 1,2 is a hierarchical addressing, right? 1 is going to represent the packet switch, I mean with which you are being connected, and 2 is the port or the destination address where you have to go, right?
are 1,5, sorry. 2 is with which port your computer is being connected, right? Switch 1 is the number of the packet switch, like 1, and 2 is with which port your computer is being connected. In the same way, if we are talking about 1,5, तो 1,5 का मतलब ये है कि स्विच आपके पास 1 है, पैकेट स्विच 1 है, एंड आपके पास जो 5 है इज द पोर्ट विथ व्हिच योर कंप्यूटर इज बीइंग कनेक्टेड, एंड सो ऑन. आई मीन आई हैव टोल्ड यू दिस. नाउ इफ यू लुक अपॉन द डायग्राम बी, आई मीन जो बी आपके पास टेबल है, इसमें आपके पास डेस्टिनेशन और नेक्स्ट हॉप की दो फील्ड्स हैं. आई मीन देयर आर टू I mean to say that fields. One is called as the destination field, another one is called as your next hop field. Destination field के अंदर आपके पास 1,2 is the destination address, right? And the next hop would be the interface one. अब देखें, switch 2 से हमें 1,2 पे जाना है. I mean, let's suppose we want to reach computer A that is being connected at 1,2. What would be the next hop for this? The next hop for this would be interface 1, right? Let's suppose we want to reach out at 1,5. 1,5 is being at on which your computer B is being connected, right? So if we want to reach at computer B from switch 2, what would be the destination? 1,5, and what would be the interface or next hop would be your interface 1, right? So now if we want to reach at 3,2, that is being connected with your packet switch 3, so what might be the next hop? Next hop would be interface 4. I mean from where your data is going out and would be received at the receiver's end. In the same way, if you want to reach at 3,5 like this onto this particular computer, your next hop again would be interface 4, and so on. Now this is clear to all of you guys? I mean 1, 2, 1, 5, 3, 2 and 3, 5 इन सब के साथ आपके पास कनेक्टेड हैं. इन सब के जो नेक्स्ट हॉप है interface 1 for the first two, and interface 4 and interface 4 for the next two. अब अगर हम बात करें switch 2 itself की, I mean packet switch 2 की अगर हम बात करें, तो for packet switch 2 what we might have, computer E and computer F is our ultimate next hop destination. Why? Because we are not going out of this particular switch. हमारा जो destination है ना, वो यहीं पे connected है, इसी particular switch के साथ connected है. So we might be saying that our next hop would be E, computer E, and our next hop would be computer F. For 2,1 it would be E, and for 2,6 it would be F. So actually this is the representation how you are going to choose your next hop address inside a routing table, right? If anybody has any question, you might ask. Okay, so source independence, this is another concept. Now what is the source independence concept? Next hop to destination does not depends upon the source of a packet, called the source independence. Allows fast efficient routing. Packet switch needs not have complete information, just next hop. Reduce total information. Increase dynamic robustness. Network can continue to function even if topology changes without notifying entire network. Now see, I have given you the idea of source independence in the previous slide. Actually, जब आपका next hop to destination does not depending upon the source of the packet, this is what you can call it as a source independence. Now I would like to give you an example. ठीक है जी, देखें लाहौर से इस्लामाबाद आपका नेक्स्ट हॉप है. ठीक है जी, फॉर लाहौर, आई मीन लेट्स सपोज इफ समबडी इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू लाहौर टू पेशावर, तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट हॉप क्या है? इस्लामाबाद. ठीक है, लेकिन लाहौर के ऊपर आपके पास कौन कौन से लोग आ रहे हैं टू रीच एट आई मीन टू से दैट इस्लामाबाद, आई मीन what are the peoples who has to travel from Lahore to Islamabad? We don't have to care about them. हमारे पास सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? I mean, let's suppose लाहौर से हमारे पास लाहौर के लोकल होंगे. Somebody is coming from Karachi, somebody is coming from Multan. There are different flights which are coming to Lahore, and all of these people have to travel to Islamabad. ठीक है जी, जो उसकी next stop है. I was telling you कि let's suppose if you have something like I mean अब कराची से भी लोग आ रहे हैं, मुल्तान से भी आ रहे हैं. So these are the source addresses. लेकिन destination जो हमारा है, that has to be decided that at what destination your data has to be sent, or at what destination or at what next hop your data has to go. So this concept is being called as your source independence. I'm going to again read it for you.
next hop to destination does not depend upon the source of a packet. ठीक है जी, आपके पास जो next hop की जो destination होती है वो depend नहीं करती है आपके source ID के ऊपर या source of the packet के ऊपर. This concept is being called as source independence. अब इसका idea, इसका advantage क्या है? Advantage is it allows fast and efficient routing. I mean, if someone has to look for the source address as well as the destination address, that process would be slow. But if one has to only look for the destination address, the process would be fast. So based on that, based on the source independence, your procedure of routing would be more fast and more efficient by applying source independence. So, right? Hopefully that is clear to you guys, right? So now we have to look for hierarchical addressing and routing. The procedure of forwarding the packets from one hop to the next is known as routing. ये चीज़, ये डेफिनेशन आप अपने जहन में बिठा लें. इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ राउटिंग. आई मीन द प्रोसीजर ऑफ फॉरवर्डिंग अ पैकेट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट हॉप इज नोन एज राउटिंग. आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ हॉप्स which are being present inside our network. तो उस नेटवर्क के अंदर जैसे ही आपका डेटा एक हॉप से दूसरे हॉप तक फॉरवर्ड होगा, based on certain criteria, based on certain characteristics, efficiency, robustness, these are the certain criteria, shortest path. Based on that, the path that is being selected to send your data from source to destination, that particular idea is being called as routing, right? तो ये definition है जो आपको याद करनी है. And then the same hierarchical addressing and routing algorithms that I would like to tell you, जो मैंने आपको पिछली डायग्राम में बताया कि let's suppose this is packet switch 1, this is packet switch 2 and this is packet switch 3. ठीक है जी. अब एक्चुअली आपने इसको कंसीडर क्या करना है कि पैकेट स्विच 2 से आपका डेटा 1 पे जाएगा और 3 पे जाएगा. आई मीन दिस इज अवर सोर्स एंड दिस इज अवर डेस्टिनेशन, राइट? Hopefully this is clear to you guys. This is your interface 1 and this is your interface 4, right? Now what is going to be happen, let's suppose you have switch 1, packet switch 1, in which your 1 and 2, the computer A is being connected at an interface 1 and 2 and your computer B is being connected at interface 1, 5. In the same way, your computer C is being connected at 3, 2 and computer D is being connected at 3, 5, right? In the same way, computer E is being connected with 2, 1 and 2, 6, so on, right? So actually what we want to do, I would like to tell you that how the destination and next hop is going to be different. अब देखें, ये चीज मैं आपको पिछली स्लाइड पे समझा के आया हूँ, but again I am going to repeat it for you. Let's suppose if anything wants to be sent from switch 2 to switch 1, ठीक है जी, तो आपकी नेक्स्ट हॉप क्या होगी? स्विच 1. अब मैं एक आपको जनरली बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्विच 1 आपकी नेक्स्ट हॉप नहीं होगी, लेकिन इसका कोई ना कोई इंटरफेस आपका नेक्स्ट हॉप होगा. ठीक है जी. अब देखें, आपका डेस्टिनेशन क्या है? 1, 2. आप आई मीन डायग्राम बी की फर्स्ट लाइन को देखें. 1, 2 इज योर डेस्टिनेशन, right? 1, 2 is your destination, right? So what is the next hop? Next hop is interface 1. अब देखें, 1, 2 तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा इंटरफेस चाहिए, कौन सा हॉप चाहिए? That would be this one. This is an interface 1 which is being connected with switch number 1, packet switch 1, and that would help you to reach at the destination 1, 2, right? And in the same way, if you are talking about 1, 5, 1, 5 is what? The destination. That is your computer B is being connected. तो switch 2 से अगर आपका डेटा 1, 5 तक जाना है, तो आपका next hop क्या होगा? That would be interface 1, right? And in the same way, interface 4 and interface 4 is the destination for 3, 2 and 3, 5. And for computer 2, 1 and for computer 2, 6, the next hop would be computer E and computer F, right? I have already explained you. So this is how your destination and next hop are being combined to form an hierarchy. I mean, are going to show you the relationship between your hierarchical addressing and the routing mechanism. Hopefully that is clear to you guys. Now, in particular, all destination on same switch have same next hop. Thus, routing table can be collapsed. अब देखें, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर आपके पास सेम स्विच के ऊपर आपका सेम नेक्स्ट हॉप है, राइट? अब अगर हम देखें डेस्टिनेशन, अगर हमारे पास है 1, एनीथिंग, योर इंटरफेस वुड बी योर इंटरफेस 1. आपका नेक्स्ट हॉप क्या है? इंटरफेस 1.
3 comma anything, your interface, your next hop would be interface 4. 2 comma anything, your interface would be your local computer. Now what is anything? अब ये जो anything है ना, anything is something like your 2 and 5. These are the I mean to say that ports through which you are being connected with that particular switch. तो अगर आप एक ही switch पे connected हैं तो that value would be anything. Your outer interface would be same. ठीक है ना? अब देखें, try to understand the concept. 1 comma anything का मतलब क्या है? 1 comma anything का मतलब ये है कि let's suppose if 1 is this, तो आपका final interface क्या होगा? Let's suppose 2 और 5 कुछ भी हो, आपका जो आउटगोइंग इंटरफेस या नेक्स्ट हॉप है दैट वुड बी इंटरफेस 1 फॉर पैकेट स्विच 1. द फर्स्ट वैल्यू वुड रिमेन सेम, द सेकंड वैल्यू वुड बी एनीथिंग, योर फाइनल इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप वुड बी द सेम, राइट. अब इस डायग्राम में देखिए आप, अगर आपके पास पैकेट स्विच 1 है, एनी वैल्यू कुड बी रीच टू द इंटरफेस 1. अब आ जाए आप पैकेट स्विच 3 के ऊपर. पैकेट स्विच 3 जो आपका है, ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू 3 है, सेकंड वैल्यू भी 3 है, ठीक है, दिस इज द सेम. सेकंड वैल्यू आपके पास कुछ भी हो, आपका जो नेक्स्ट हॉप वुड बी योर इंटरफेस 4. इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैकेट स्विच 2, आपके पास फर्स्ट वैल्यू 2 है, सेकंड वैल्यू भी 2 है, सेकंड वैल्यू कुछ भी हो, आई मीन इट इज 1 एंड 6 ओवर हियर, आपका जो नेक्स्ट हॉप वुड बी 1 एंड 4, सॉरी दैट वुड बी द लोकल कंप्यूटर. इसमें तो आपका डेटा बाहर जाएगा ही नहीं ना, दैट वुड बी ई एंड एफ, that would be same, right. If you can look into this diagram, so local computer would be your next hop. So this is what actually the relationship between your hierarchical addressing and your routing mechanism. So now routing in a WAN, more computers equals to more traffic, can add capacity to WAN by adding more links and packet switches. Packet switches need not to have computers attached. Interior switches, no attached computers. Exterior switches, attached computers. And now see, when we are talking about WANs, तो WANs में हमारे पास क्या होता है कि WAN is a something which is the combination of multiple packet switches. ठीक है, I have told you that there are certain packet switches which are being connected with the computers, and there are certain packet switches which are not connected with the computers but they are the intermediary switches which are being connected with each other. I mean एक switch दूसरे से connected है, दूसरा तीसरे से connected है. So such type of packet switches which are connected with the computers, they are being called as your exterior switches. And those switches or those packet switches which are not being connected with the computers but they are internally connected, they are being called as your interior switches. Hopefully that is clear to all of you guys. ठीक है जी. इंटीरियर और एक्सटीरियर स्विचेस के दरमियान डिफरेंस क्या है? इंटीरियर स्विचेस के साथ आपका कोई भी एक्सटर्नल कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होता, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. और एक्सटीरियर स्विचेस आपके पास क्या होते हैं? व्हेन दे आर बीइंग कनेक्टेड विद द आउटसाइड कंप्यूटर्स. तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में आपको कितने एक्सटीरियर स्विचेस नजर आ रहे हैं? All are being called as your exterior switches. There is no any interior switches inside this particular diagram. But if there is some picture or there is some packet switch which is going to connect your switch 1 and switch 3, but the computers are, let's suppose switch 2, उसके साथ आपके पास E और F destinations connected नहीं है, तो that would be your interior switch. I mean no any computer is being connected but actually your packet switch 2 is being connected internally to packet switch 3 and packet switch 1. So such type of computers are being called as your interior switches, right? Hopefully that is clear to you guys, right? So both interior and exterior switches do forwarding, packet forwarding and need routing tables. अब देखें, पैकेट स्विच का काम भले वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, उसने दो काम करने हैं. द फर्स्ट वन इट हैज टू फॉरवर्ड द पैकेट, द सेकंड वन इट हैज नीड्स राउटिंग टेबल. आपके पास राउटिंग टेबल होनी चाहिए, उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि मुझे डेटा कहाँ भेजना है. एंड सेकंड इट हैज टू फॉरवर्ड द पैकेट टू अ पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप और टू द डेस्टिनेशन, राइट. सो इट मस्ट हैव अ यूनिवर्सल राउटिंग, नेक्स्ट हॉप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, optimal routes, next hop in table must be on the shortest path to the destination. ठीक है जी. और ये दो चीजें आपके पास होंगी, एक तो आपके पास यूनिवर्सल राउटिंग होगी, नेक्स्ट हॉप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, राइट. एंड सेकंड थिंग इज ऑप्टिमल राउट्स, द बेस्ट राउट
to send your data from source to destination is being called as your optimal routes. तो routing के ये आपके पास mechanism procedures follow होंगे and your data would be sent from source to the destination by using these particular routing mechanisms, right? Now, modeling a WAN. I mean, how would you model a WAN? Use a graph. I mean to say that we have the nodes model switches, edge models direct connection between the switches, captures essence of network ignoring attached computers. अब देखें, if you can see this diagram, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे पैकेट स्विचेस हैं, they are bit complex. It is very difficult to select what is the next hop for router 1, what is the next hop for router 3, what is the next hop for router 4. For that reason, we are going to create or we are going to design a graph that is called as your network graph, right? That you can see in the same slide on the right hand side. ठीक है जी, अब आप इसको कैसे बनाएंगे? You have to create a node that is a circular shape circle that is acting as a node, and the distance between 1 and 3 जो आपके पास edge है, this is what you can call it as an edge. ये जो line है ना आपके पास, this line, this is called as an edge. This edge is going to show you the connection between packet switch 1 and packet switch 3, right? This is what the connection between two computers or the two nodes. Now see, if you are going to find the relationship between 1 and 3, तो आपके पास 1 कितने कंप्यूटर्स के साथ कितने पैकेट स्विचेस के साथ कनेक्टेड है? It is being connected with only one packet switch that is called as 3. Now see, 1 के साथ तो कोई भी और कनेक्टेड नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक एज बनानी है, ठीक है, and then you have to connect 1 with 3. This is what you can call it as an edge node. I mean to say that 1 to 3 connectivity. Now look at 3 packet switch 3. अब पैकेट स्विच 3 के साथ आपके पास कौन कौन सी नोड्स या पैकेट स्विच कनेक्टेड है? 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है and 4 connected है. So what you have to do, you have to make 3 nodes, 3, 2 and 4. You have to make a connection or edges between 3 and 2. You have to make a connection between 3 and 1, and you have to make a connection between 3 and 4, right? This is how you are going to represent this particular connection. In the same way, if you are talking about a computer number 4, packet switch 4. Packet switch 4 is being connected with only 2 packet switches. One is being called as packet switch 3, another one is called as packet switch 2. So they are being connected, packet switch 3 and packet switch 2, they are being connected with the packet switch 4, right? So this is the connection that we have shown through the edges, and then we have packet switch 2 that is being connected with 3 switches, not 3, 2, yes, 2. The one is packet switch 3 and the other one is packet switch 4. तो आप देख सकते हैं कि packet switch 2 आपका connected है 3 के साथ और packet switch 2 आपका connected है 4 के साथ by using these edge nodes, right? So this is a network, a complete network graph that we can design on the basis of this particular diagram, right? तो यहाँ पे आप आ जाएं. Okay जी, route computation with a graph can represent routing table with edges. अब यहाँ पे देखें, ग्राफ एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द राउट्स. अब देखें, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी हैव डेस्टिनेशन कॉलम एंड द नेक्स्ट हॉप कॉलम, राइट? अगेन destination column and the next hop column, destination column and the next hop column, and so on. So we have, for each node we have individual destination as well as next hop column. ठीक है जी, ये चीज आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है. Now see, in this particular diagram you have a node 1. For a node 1 you have an individual destination, you have an individual next hop. For node 2 you have individual destination, you have an individual next hop, and for node 3 and node 4 so on. I mean the same procedure is going to be followed. अब आ जाएं प्रीवियस डायग्राम के ऊपर, यहाँ पे आ जाएं. अब आपके पास नोड 1 कौन सी है? दिस वन. 2 ये वाली है, 3 ये वाली है और 4 ये वाली है, ठीक है जी. अब अगर हम नोड 1 उठाते हैं, दिस वन, दिस इज द नोड 1. अब अगर हम इसको उठाते हैं तो इसकी टेबल, राउटिंग टेबल कैसे बनेगी? आई मीन कंसीडर द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड टेबल, नोड 1, ठीक है जी, सबको नजर आ रही होगी. नाउ डेस्टिनेशन फॉर, अगर हम 1 नोड की बात करें, ये आपके पास डेस्टिनेशन है, इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा? नथिंग. इसका तो नेक्स्ट हॉप है ही नहीं अगर आपके पास डेस्टिनेशन ही 1 है. आई मीन अगर आपने 1 तक पहुंचना है और आप 1 पे खड़े हैं
so you don't have any destination. The destination is the same. If you have some any data, you have to drop it here. You don't have to go outside of this particular network. आपने यहीं पे drop करना है, तो इसके लिए तो destination है ही नहीं, ठीक है जी। अब आ जाएं नोड 2 के ऊपर। I mean destination, अगर हम हमारी destination 2 है, I mean this is your destination. Let's suppose आपकी ये destination है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास next hop क्या होगा? Now next hop for destination 2 is 1,3. Now how it becomes 1,3? अगर आपने 2 तक पहुंचना है तो आपको 1 से 3 तक आना पड़ेगा and then you can reach to the 2. This is what you can call it as a next hop for computer 2, right? In the same way, you have next hop, I mean you have a destination 3. अगर आपके पास 3 है तो वहां पर पहुंचने के लिए आपका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 1,3. अगेन द सेम थिंग, राइट? एंड इफ यू हैव नोड 4, अगर आपके पास नोड 4 है तो उस तक पहुंचने के लिए आपका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? अगेन 1,3. तो इन द सेम वे अब आ जाएं नोड 2 के ऊपर। अगर हम नोड 2 के ऊपर आते हैं तो नोड 2 के ऊपर इफ अवर आई मीन, अब देखें नोड 2 का मतलब ये है नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस नोड, ठीक है, इसको हम डेस्टिनेशन, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, दिस वन, दिस नोड। अब अगर हम इस नोड को कंसीडर करें तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? अगर डेस्टिनेशन हमारे पास 1 है, आई मीन नोड 1 है, आई मीन इफ वी आर एट नोड 2, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? 1 है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी नेक्स्ट हॉप की? सी 2,3. हाउ इट बिकम्स 2,3? ये 2 हमारे पास सोर्स नोड, यहां तक हम पहुंचे 2,3, अल्टीमेटली वी विल रीच टू द 1 बिकॉज डेस्टिनेशन हमारी क्या है? 1 है और 3 से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपका डेटा 3 से डायरेक्टली 1 तक पहुंच जाएगा, राइट? इन द सेम वे इफ वी आर एट 2, तो 2 तो हमारा अपना एड्रेस है, वी आर एट द सेम लोकेशन, तो हमारा नेक्स्ट हॉप होगा ही नहीं, वी हैव टू ड्रॉप अवर डेटा एट द सेम पॉइंट, राइट? एंड इफ वी आर एट 3, तो 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 डेस्टिनेशन अगर हमारी है तो 3 डेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि दिस इज योर 3, तो 3 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2,3 एच को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इफ यू कैन लुक इनटू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यू हैव द सेम डेस्टिनेशन 2,3. इन द सेम वे 4 अगर हमारे पास नोड है, दिस वन, अगर 4 तक हमने पहुंचना है तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? 2,4. दिस वुड बी 2,4. होपफुली दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब 3 और 4 की जो है ना वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। हाउ दिस इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, ये आपने इसको खुद देख लेना है डायग्राम से और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इफ यू आर क्लियर विथ 1 and 2 तो 3 और 4 आपके लिए करना इतना मुश्किल नहीं होगा, राइट? सो रिडंडेंट राउटिंग इंफॉर्मेशन, नोटिस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन राउटिंग टेबल फॉर नोड 1। अच्छा, अब एक चीज और आ गई। अब देखें, हमारे पास एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सेम राउट यूज हो रहा है, ठीक है। अब नाउ सी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोड 1, you might have 1,3, 1,3, 1,3 is the same next hop that is being used for 2, 3 and 4. When we are talking about node 2 के अंदर हमारे पास 1 और डेस्टिनेशन 3 के लिए सेम रिडंडेंट लूप यूज हो रहा है, नेक्स्ट हॉप यूज हो रहा है 2,3, 2,3. When we are talking about node number 3, there is no any same route, so we don't have to consider this one. And when we are talking about node 4, so we might have one destination 1 and destination 3 are using the next hop the same values 4,3 and 4,3. This is what you can call it as a duplication. अब इस duplication को overcome करने के लिए हम एक universal route select करते हैं. Switch 1 has only one outgoing connection. All traffic must traverse that connection. तो इस universal value को select करने के लिए हमने इसको duplicate नहीं करना. We have to select another table that is called as your default route. Can collapse routing table entire with a default route. If destination does not have an explicit routing table entry, use the default route. हम क्या करते हैं, हम उन तीनों की जो सेम एड्रेसेस हैं उनको हम एक सिंगल एड्रेस से शो करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज द डिफॉल्ट राउट. सो एवरीवन हैज टू यूज दैट पर्टिकुलर डिफॉल्ट राउट व्हेन दे रीच टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. अब आ जाए इस डायग्राम के ऊपर. इस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, वी हैव अ नोड 1, राइट, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4. 1 के लिए हमारे पास नेक्स्ट हॉप क्या है, कुछ भी नहीं है, द सेम 1.
फॉर 1,3 हमारे पास सेकंड 3 और 4 डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास एक ही नेक्स्ट हॉप था, दैट इज 1,3। तो हमने क्या किया, वी हैव रिप्लेस्ड 2, 3 एंड 4 विद द स्टैटिक एंड दिस वुड बी अवर डिफॉल्ट राउट। अब अगर किसी ने भी सेकंड 3 और 4 डेस्टिनेशन तक जाना है तो उन सब के लिए आपके पास एक ही डिफॉल्ट राउट यूज होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर 1,3, right? We do not have to use 1 and 3 again and again. We have to set this particular route as the default route, and that would be 1,3. In the same way, when we are talking about node number 2, तो node number 2 में आपके पास 2 का default route next hop हो जाएगा, nothing, वहीं पे data drop हो जाएगा। 4 के लिए आपका जो path है that would be 2,4. For 3 and 1 we have a single we have the duplicate paths, I mean 2,3 and 2,3। तो हमने क्या किया, उन दोनों paths को merge करके एक ही कर दिया 2,3 and we have placed static over here, right? So this is how you are going to manage this thing. In the same way, node 3 के अंदर हमारे पास कोई similar links नहीं है, और node 4 के अंदर 1 और 3 को हमने combine किया by using 4,3। So this is how you are going to calculate your default route using a routing table, right? And finally, we do have a summary. We have gone through the concept of source independence. We have gone through the concept of the relationship between hierarchical addressing and routing. Then we have discussed regarding routing in a WAN, how the routing is going to be occurred inside of wider area networks. And then we have gone through default routes, right? That is all from my side.